चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग और कंडीशन विदाउट स्लाइडिंग। ओके, तो प्योर रोलिंग के लिए कंडीशन क्या होती है देखो। तो अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पर रोल हो रही है, ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, v com इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, और ये वो सरफेस है जिस पर वो रोल हो रही है। नाउ सरफेस पर जो पॉइंट है वो है P इज पॉइंट ऑन सरफेस। ओके, और बॉडी का जो पॉइंट है करस्पॉन्डिंग उसके कांटेक्ट में, ये जो पॉइंट है, सपोज इसको नाम दे दिया हमने A इज पॉइंट ऑन बॉडी। तो रोलिंग बॉडी फिलहाल एट दिस इंस्टेंट है ना, इस इंस्टेंट का मतलब ये है कि रोलिंग बॉडी रोल हो रही है और हमने फोटोग्राफ लेकर रुका दिया है। इंस्टेंट का मतलब होता है फोटोग्राफ ले लेना, फोटोग्राफ लेना मतलब टाइम को रोक दिया हमने, तो ये टाइम को रोक दिया है। अब ये बॉडी रोल हो रही है। रोल बॉडी कब होती है? जब, तो व्हाट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग? तो कंडीशन फॉर रोलिंग क्या रहेगा? जब ए पी के रिस्पेक्ट से ना तो घसरते हुए आगे जाएगा ना फिर घसरते हुए पीछे जाएगा। मतलब ये है कि द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ point A on body with respect to point P on the ground or surface जिस पे body roll हो रही है. Okay, so this is the surface on which body is rolling. That must be zero. This is very important condition. The relative velocity of point, बॉडी पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑन द ग्राउंड मस्ट बी जीरो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पी इक्वल टू जीरो। इट मींस द वेलोसिटी वेक्टर एट ए मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी वेक्टर एट पी। ओके, अब ये इंस्टेंटेनियस भी हो सकता है। ओके, तो अब ध्यान से देखेंगे आप। तो दिस इज द कंडीशन फॉर प्योर रोलिंग। ओके, और अगर ग्राउंड रेस्ट पे है देन द केस विल बी डिफरेंट। और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग, सो द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम मस्ट बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी वेक्टर ऑफ पॉइंट पी ऑन द सरफेस, व्हिच क्लियरली शोज दैट the acceleration of point A must be equal to acceleration of point B. ये कब यूज करने का? If the rolling is accelerated pure rolling. अगर pure rolling accelerated pure rolling है तो आप accelerations को equate कर सकते हैं। ओके, और uniform motion pure rolling है, that is uniform rolling। uniform rolling मतलब rolling with fixed speed, fixed V, fixed omega, and accelerated मतलब omega and v are changing, मतलब alpha है और a है center of mass के पास। okay, so this is very important condition for rolling motion। okay, now let us see, for example, the first case, if you are given a body, a rolling body, या आपको दी है एक rolling body है, this is a body which is rolling with angular velocity omega and velocity of center of mass, and it is rolling on a, so this particular body is rolling on a stationary ground, stationary surface or stationary ground. Okay, and say this is point A on the body, this is point B on the body, this is point C on the body, and this is point D on the body. Okay, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, हम इधर ले लेते हैं। This is the center of mass of this body and this is point D. Okay, so VCOM is the center of mass. Okay, now let us see here. अब हमको पूछा है what is velocity of point A, what is velocity at point B, what is velocity at point C, and what is velocity at point D. We need to find velocity at point A, B, C, D at all points. Okay, so अब हमको पता है, we know that ये rolling motion जो होता है,
रोलिंग मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस. अगर कोई बॉडी रोल होती है तो डेफिनेटली इट इज इक्वल टू every particle is having translational motion and the velocity of their translational motion is equal to the velocity of their center of mass. So each and every particle is having VCOM in this direction, this one. Every particle is translated. At the same time, all particles here, say this is center of mass, this point is A, this point is B, this point is C, this point is D. Okay? Similarly again, this point is A, this point is B, this point is C, and this point is D. So a rolling motion is the combination of translatory motion and it is the combination of translatory motion and rotational motion. Rotational velocity is omega. So here every particle is having tangential velocity of rotational motion r omega, r omega, r omega, r omega. Got it, everybody? So now if you see carefully, so point A is having how many velocities? So if you draw point A separately, तो point A के पास एक velocity इधर है जो translation motion की है और उसी point के पास एक velocity इधर है जो r omega है. Okay, it means the net velocity at point A is what? Velocity of center of mass minus r omega, because body is going in that direction finally. Okay, but what is condition for rolling? The velocity of point A with respect to point on the ground must be equal. So we can say that this velocity of point A must be equal to velocity of point on the ground. So what is velocity of point A? So it will be velocity of center of mass minus r omega equal to. Okay? So we know that velocity of point A should be equal to Pn, which is equal to 0 because ground stationary है. So A की velocity तो मिल गई हमको 0. We have got the answer. But बाकी velocities को निकालने के लिए हम relation निकाल रहे हैं. Okay? जैसे फॉर एग्जांपल हमको ये दिया नहीं है, इट इज नॉट गिवन, ओमेगा इज नॉट गिवन, इट इज ओनली सेड दैट की बॉडी इज रोलिंग. सो कोई बात नहीं, तो इट इज इक्वल टू 0. तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड r ओमेगा आर इक्वल. ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल कंडीशन बिकॉज़ नाउ आई कैन से कि r ओमेगा इज नथिंग बट VCOM. r ओमेगा इज नथिंग बट VCOM. व्हेन जब भी ग्राउंड स्टेशनरी ग्राउंड पर रोलिंग होता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और r ओमेगा क्या आ जाता है, सेम ही आता है. ओके, दिस इज फिक्स. कभी भी देखो तो यहाँ पर A के पास कितने वेलोसिटी है, एक VCOM इधर और एक r ओमेगा इधर, और A की वेलोसिटी उतनी होनी चाहिए जितना पॉइंट P की है ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड रेस्ट पे तो P 0 है तो A की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, 0. इसका मतलब हमने जो कंडीशन डिराइव करी, ओके, दिस इज कंडीशन for rolling on stationary ground. Stationary ground पे रोल होने के लिए जो कंडीशन होती है वो ये है. चलिए अब बाकी पॉइंट्स पे वेलोसिटी हम फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो लेट्स फाइंड वेलोसिटी ऑन डिफरेंट अदर पॉइंट्स. B, C, D सब देखते हैं. ओके, ये पॉज करके आप लिख लेना अच्छे से. तो now you will see that let's consider point B. So tell me, point B is having how many velocities? Okay, so it is very clear. Point B. So point B का ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन वेलोसिटी उसको कहाँ लेके जा रही है, इधर, और टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ लेके जा रही है, इधर, which is r ओमेगा, जो कि हमने देखा कि r ओमेगा VCOM फिलहाल सेम है. Not always, हाँ. If you are preparing for JEE Advanced, then don't go for this condition. Don't learn this condition. There is only one condition. A velocity of A must be equal to P, and that's it. बार-बार आप derive कर सकते हैं टाइम पर. Now it is very clear that these are perpendicular to each other. So by parallelogram law, if this is r omega, so this is also r omega. This is VCOM. This is also VCOM. So the
diagonal will represent the net velocity at point B. And what is the net velocity at point B? So it will be under root of r omega ka square plus b com ka square, but in this numerical r omega and b com are same, so it will be under root of 2 v com ka square, so it will be root 2 times of velocity of center of mass, and that's the direction. It means point B is having velocity in this direction somewhere here. Now let us consider point C. So the point C is again having how many velocities? 2 velocities. One, VCOM in this direction. Another, R omega in this direction. Now the vectors are parallel. So I can say what is velocity at point C? So obviously it will be R omega plus VCOM. So it will be twice of VCOM, because on stationary ground, R omega and velocity of center of mass are equal. I hope everybody is getting this. Okay, now let's talk about point D. So that is quite easy. The velocity of center of mass of point D is here, and tangential velocity for point D is here, R omega. So again, if we complete the parallelogram, then you will get the resultant velocity of point D in this direction. That is velocity at point D. Okay, so now we can see that velocity of point D will be equal to under root of r omega ka square plus velocity of center of mass ka square. On a stationary ground, r omega and VCOM are equal, so it will be twice of velocity of center of mass ka square. So it will be root 2 times of velocity of center of mass. So that becomes velocity of point D. Okay. Now in the next video I'll do a numerical on when the ground is in motion. Okay. अब जब ग्राउंड मोशन में होता है तो कैसे सॉल्व करने का वो अगले वीडियो में बताता हूँ मैं आपको. थैंक यू.